Everything good? Yes, sir. Any doubts from the last class? No, sir. Okay. So let's wait 4-5 minutes till others join. Okay. Hmm. Okay. Hello, Sharish. Hello, sir. Everything good? Yes, sir. Any doubts from the last class? No. Okay. So from today, we are starting inverse trigonometric functions. Okay. New chapter, new day, and new week also. From this week onwards, your classes will be held on Tuesday and Thursday. Okay. Okay, sir. At 9:30 p.m. IST. Both are clear. Do not miss the class. Okay. Saturday, Sunday नहीं होगी maths की class. It will be on Tuesday and Thursday, 9:30 p.m. IST. All right. Okay, sir. Okay. Deborah, clear? Yes, sir. Okay. So what is inverse trigo functions? Both of you are aware about trigonometric functions, right? Sin x, cos x, and so on. Everyone? Yes, sir. So what is inverse? We did inverse function in the last class, right? If you put sine pi by 6, what you get?
1 by sign 1 by 2, right? So we can say if this is a mapping diagram, pi by 6 is related with half. So inverse means कोई ऐसा function where if you put half, it should give you pi by 2, right? यही पढ़ा था ना हमने inverse, उल्टा mapping diagram. Yes or no? Yes, sir. So this is denoted as sine inverse. Okay, and remember this sine inverse का मतलब 1 upon sine नहीं होगा. ये गलती कभी नहीं करेंगे. Okay, remember in the last class we denoted f inverse like this. So this is the symbol of sine inverse. This is a separate function. 1 upon sine नहीं है. Okay. Okay, sir. All right. तो सबसे पहले देखिए ग्राफ डोमेन एंड रेंज. कल मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी, फॉर ए फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल. इन्वर्टिबल मींस इनवर्स फंक्शन अगर एग्जिस्ट करेगा, देन द फंक्शन मस्ट बी व्हाट? देयर वाज अ कंडीशन. Bijection. Bijection, right? Absolutely. So 1 on 2 is a must condition for a function to be invertible. Can anyone tell me if sin x is bijective or not? Yes. Sure. कल हमने cos x का निकाला था ना? Cos x was bijective. Yes or no? Cos x was bijective? No. No. तो sin x भी bijective होगा क्या? No. No. If you look at the graph of sin x, this is the graph, and I told you about a method to find 1 horizontal line test. देखो इस x1, x2, y, x3, x4, x5 इन सब पे एक ही वैल्यू आ रही है ना, तो दिस इज नॉट 1 ओके. Okay. बट हम इनवर्स फंक्शन पूरा चैप्टर है हमारे में, तो ये तो या तो मैंने पिछली क्लास में झूठ बोला था, या तो इस चैप्टर में कुछ झूठ फरेब चल रहा है. यस और नो? नॉट अंडरस्टूड. देखो आई टोल्ड यू टू हैव द इनवर्स फंक्शन, द फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव. एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट बाइजेक्टिव. तो तीनों अलाइन नहीं हो रहे ना. यस और नो? Yes. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो बहुत सिंपल सी बात है. जो हमसे पहले बड़े बुजुर्ग आए, सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. दे सेड एक काम करते हैं, इनकी हाथों में हथकड़ियां लगा देते हैं, एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं, और दिस मीन्स वी आर रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन ऑफ साइन एक्स. कहां से कहां तक? -π/2 से π/. हमने क्या बोला कि हमें इसके आगे पीछे का वैल्यू पता ही नहीं है. x कैन ओनली बी फ्रॉम -π/2 टू π/2. अब अगर ये ग्राफ ड्रॉ करें हम इतना, सो दिस इज 1 यस और नो? Yes. सो इनवर्स फंक्शन जो पढ़ते हैं हम, ये याद करिए बस, दैट इट इज इन ए रेस्ट्रिक्टेड डोमेन. नॉट होल ऑफ sin theta is invertible, but if you restrict this, this is invertible. Okay, जुगाड़ लगा रहे हैं in a sense. Okay, sir. Okay, so this is called principal domain. अब कोई और होगा वो कहेगा सर आपने इसको रेस्ट्रिक्ट क्यों नहीं किया,
आगे माइनस सॉरी π/2 से 3π/2। सर यहाँ से ये पार्ट भी तो इन्वर्टेबल होगा, बिल्कुल होगा, नो वन इज डिनाइंग दैट। ओके, बट प्रिंसिपल मेन जो हम पढ़ते हैं दिस इज दिस। आप किसी चीज को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, नो वन विल हैव एनी इशू, बट दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डोमेन, -π/2 से π/2। ओके, Okay. so let's look at the graphs। पूरा स्क्रीन यूज करना है हमें। दिस इज sin x, दिस इज sin इनवर्स। ओके, Okay. sin x का ग्राफ तो हमने देख ही लिया, बचपन से देखते आ रहे हैं। विल ओनली ड्रॉ फ्रॉम हियर टू हियर, एंड मेरी ड्राइंग काफी खराब है, सो यू गाइस ड्रॉ a good graph। This is π/2, this is -π/2, this value is 1, this value is -1। Okay, Okay. domain of sin x are range of sin x is -1 to 1। इनवर्स का कैसे बनेगा? देखो, इनवर्स फंक्शन में y will become x, x will become y, yes or no? Yes. So on x-axis we will plot -1 to 1, रेंज जो है वो डोमेन बन जाता है, so -1 to 1। π/2 पे we were getting 1, तो 1 पे we will get π/2, Yes. at -1 we will get -π/2, yes or no? Yes. So the graph of inverse trigo is like this। ठीक है, if you look at the curvature changes, ये साइन का होता है एंड साइन इनवर्स का उल्टा कर्वेचर होगा। ओके, Okay. so here domain of sin inverse x is -1 to 1, and range of sin inverse x is -π/2 to π/. All right, everyone, Yes, sir. please write it down।
Done, sir. Okay. So next function is cos x. This is cos x. This is cos inverse x. You guys know the graph of cos x? This is the graph of cos x. Yes or no? Yes, sir. This is 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2. तो इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम? 0 to pi. Okay, 0 to pi. At 0, the value is 1. At pi, the value is -1. Domain is same as sin theta. Range is -1 to 1. For cos inverse x, y will change into x will change into y. So -1 to 1. देखो 1 पे कितना मिल रहा है? 0, राइट? 0 पे 1 मिलता है, तो 1 पे हमें कितना मिलेगा? 0. So this is the 0. point. Pi पे we are getting -1. So at -1 we will get pi पे we are getting -1. So at -1 we will get pi. 5. So one point is this, one point is this. So cos का ग्राफ आता है यूं. Okay, this is this kind of. And this point is, देखो pi by 2 पे 0 मिलता था, तो 0 पे this point is pi by 2. Domain is -1 to 1. Range is 0 to pi. Let's draw it out. ग्राफ क्लियर होना है कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? Always find 2 points and you will get the structure. Done, sir.
Okay. Next one, 10x. And 10 inverse x. ओके, 10x का ग्राफ कैसा होता था देखो, π/2 से आता था एंड -π/2 पे जाता था. Remember this graph? Yes, sir. This is pi. Same with 3π/2 से आएगा, ऐसा चला जाएगा, -π, यहाँ से ऐसा आएगा, ऐसा चला जाएगा. So we are restricting the domain from -π/2 to π/2. So domain of 10x are all values but not odd multiples of π/2. Right? π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2 हम देखते हैं, it becomes infinite or minus infinite, so they are not included. In range, it can be anything, so R, or you can say minus infinite to infinite. Tan inverse x में देखो, हम सिर्फ इस ग्राफ पे फोकस है, राइट. सो π/2 पे वी आर गेटिंग इनफाइनाइट, 0 पे वी आर गेटिंग 0, एंड -π/2 पे वी आर गेटिंग माइनस इनफाइनाइट. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले y वाली एक्सिस बनाते हैं. दिस इज π/2, दिस इज -π/2. इसको देखिए ध्यान से, π/2 पे वी आर गेटिंग इनफाइनाइट, दैट मींस π/2 पे यू शुड गेट इनफाइनाइट, and -π/2 पे minus infinite. So graph of this is like this. Okay. Okay, sir. Domain is R, range is -π/2 to π/2, both not included. Open brackets. Very important to remember. Okay. Open brackets means not included. ये पता है सबको? Should I explain this? What open bracket means? No, sir, we know. No. Okay. So please write it down.
Done, sir. Okay. Next one, cortex. Cot inverse x. Zero, 5, 2, 5, minus 5, minus 2. This is 5 by 2, 3, 5 by 2. What the graph बताइए you? And so on. Okay. So we are restricting the graph from 0 to 5. So there is r minus n pi. We cannot put multiples of pi in this. Range is r from minus infinite to infinite. Now, if you look at cot inverse x, 0 pe it becomes infinite, and pi pe it becomes minus infinite. So let's draw pi on y-axis. Pi pe minus infinite, 0 pe infinite, and at pi by 2 it is 0. This is the graph of cot inverse x, like this. Okay. Domain equals to r, range equals to 0 to pi, both not included. Done, sir. Okay. Cosec x and cosec inverse x.
0 से pi में this is 1, this is -1. 0 से pi में the graph is like this. Pi से 2 pi में the graph is like this. Here also the graph is like this. In this part the graph is like this. cosec का ग्राफ याद है सबको? नो, साइन का जस्ट उल्टा होता है। देखो साइन अगर यूं चल रहा है तो इसका उल्टा मतलब वो ऐसा चलेगा, इस वाले को उल्टा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर आगे वाले को उल्टा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द cosec ग्राफ। वी आर restricting the graph from -pi/2 to pi/2। ओके, बस ये वाला पार्ट, दिस एंड दिस। So domain is r minus, you can see n pi, right? We cannot put 0, pi or 2 pi, anything. Range is r minus -1 to 1, right? ये वाले पार्ट -1 से 1 कभी नहीं मिलते हमें cosec में, because it is the inverse of, sorry, reverse of sine. Okay, now let's see, 0 पे we are getting infinite and minus infinite also. So 0 पे एक पॉइंट तो हमें infinite मिल रहा है, एक पॉइंट हमें माइनस इनफाइनाइट मिल रहा है। pi/2 पे we are getting 1, so at 1 will get pi/2. At -pi/2 we are getting -1, so at -1 we will get -pi/2. So graph is like this. Okay, ये थोड़ा डिफरेंट लगता है सबको, so draw it very carefully. What is domain of cosec? Who can tell me? Cosec inverse, cosec का जो रेंज है वही डोमेन बन जाएगा इसका। Is it clear everyone? Yes, sir. And range, if you look at the graph, range is, देखो pi/2 से 0 आ रहा है ये वाला पार्ट, एंड 0 से -pi/2 भी आ रहा है, बट 0 नहीं मिल रहा। सो -pi/2 to pi/2 both included but not 0. Okay, Okay. please draw it.
Done, sir. Okay. Next one, last one. Sec x. Sec inverse x. Zero pi by 2 minus pi by 2 3 pi by 2 and minus 3 pi by 2. Okay. Which means pi and minus pi. Sec x का ग्राफ में ये होता है, this is 1 minus 1. ये कटोरी यहाँ बनती है, फिर अल्टरनेट कटोरियां बनते चलती हैं. Okay, so in this we restrict from 0 to pi by 2 and pi by 2 to pi. This is the restriction we put. So domain is r minus 2n plus 1 pi by 2. We cannot put the multiples of pi by 2. The range is r minus minus 1 to 1. The inverse of this, zero पे we are getting 1. So at 1 we will get 0. At pi by 2 we are getting infinite. So when you move infinite, you get pi by 2. But the same time you get negative also. Pi by 2 पे negative infinite, and at pi you are getting minus 1. So at minus 1, this is pi by 2. This is pi and minus infinite. So graph is like this. Okay. भैया क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, खुद से एक दो बार ड्रॉ कर लेंगे, then you will be clear. 0 to pi both included, minus pi by 2. Pi by 2 will never reach. Please write it down.
Done, sir. Okay. So graph is over. देखो पूरा चैप्टर इज ऑल अबाउट डोमेन रेंज एंड प्रॉपर्टीज. ठीक है, अगर आपको डोमेन रेंज अच्छे से याद है ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स फंक्शंस, देन ये चैप्टर बहुत इजी है. प्रॉपर्टीज याद है तो चैप्टर बहुत इजी है, वरना यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स सॉल्व और लेट्स learn some properties. Okay, two properties side by side. दोनों हाथ में हाथ लेके चलते हैं. प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी. फर्स्ट वन इज, पहले लिख लीजिए, देन आई एक्सप्लेन व्हाट दिस मींस. Sin inverse of sin theta. This I hope you guys remember, this is composite function. Sin inverse के अंदर sin theta है, so this will be theta when theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Okay, this minus pi by 2 to pi by 2 is principal range. I already told you. Same way, cos inverse cos theta is theta, and theta is from 0 to pi. Tan inverse tan theta is theta when theta is from minus pi by 2 to pi by 2, both not included. Cot theta, cot inverse of cot theta is theta and theta is from 0 to pi, both not included. Cosec inverse cosec theta is theta and theta is from minus pi by 2 to pi by 2 included, but except 0. Sec inverse sec theta is equal to theta. Theta is from 0 to pi, but not pi by 2. And here, what is property 2? Sine of sine inverse theta is theta. Right, sine inverse, this is x. Sine of sine inverse x is equal to x when x belongs to minus 1 to 1. Okay. Same way, cos of cos inverse x equals to x when x belongs to minus 1 to 1. Tan of tan inverse x equals to x when x belongs to R. Cot of cot inverse x equals to x when x belongs to R. Cosec of cosec inverse x equals to x when x belongs to R minus minus 1 to 1. Just open brackets. Sec of sec inverse x equals to x. X belongs to R minus minus 1 to 1. Okay, please write it down.
Done, sir. Okay. So I'll start my camera. शायद स्क्रीन लॉक हो जाए, मतलब दिखेगा नहीं. ओके, देखो, दिस इज वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, राइट? क्योंकि कल भी हमने देखा था, इफ टू फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन यू गेट आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल्स टू x. तो यहाँ भी वही हो रहा है, देखो, y इक्वल्स टू थीटा, y इक्वल्स टू थीटा, थीटा थीटा थीटा, x x x x, राइट? क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है. बट वन थिंग यू शुड रियली रियली रिमेंबर इज, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, हियर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 से 1, ठीक है? क्योंकि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 to 1, ठीक है? अब ऐसे देखो, साइन इनवर्स x जो है उसका रेंज क्या है? व्हाट इज रेंज ऑफ साइन इनवर्स x? देखिए देखिए, कॉपी में देखिए. व्हाट इज Minus रेंज? pi by 2 to pi by 2. -π/2 to π/2. तो देखो, अगर हमने लिखा साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है, x की वैल्यू हमने डाली -1 से 1, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? साइन के अंदर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है -π/2 से π/2. साइन को कोई दिक्कत नहीं है ये दोनों चीज खाने मीन्स टेकिंग एज इनपुट. ऑलराइट. Okay.
ओके, सॉरी एवरीवन, यहाँ लाइट चली गई थी. एवरीवन इज देयर? Yes, sir. ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग, राइट. यहाँ -1 से 1 अगर आता है यहाँ पर, तो साइन इनवर्स x विल पुट आउट -π/2 to π/2. नाउ डोमेन ऑफ साइन x तो सब खाता है, सब चलता है उसको, ऑल रियल नंबर्स, राइट. सो -π/2 से π/2 को इनपुट लेने में साइन को कोई दिक्कत नहीं होती. So remember this, whenever you have sine of sin inverse x, you can without thinking write x. But यही चीज अगर उल्टा होती है, ठीक है, देखो sin inverse जो है, it can only give output as -π/2 to π/2. Yes or no? Yes. But sin जो है ये सारी चीजें खाता है, सारे एंगल्स, all real numbers, right? So if I put any number other than this out of principal range, ठीक है, कोई आया कह रहा है कि सर I will put 5π/6, कोई दिक्कत नहीं है, साइन को कोई दिक्कत नहीं है. बट इफ यू राइट x here, तो ऐसे देखो, साइन के अंदर हमने डाला था 5π/6, क्योंकि साइन को कोई दिक्कत नहीं होती. बट साइन इनवर्स जो है, इट कैन ओनली गिव आउटपुट एज -π/2 से π/2, बट 5π/6 लाइज आउटसाइड दिस, तो वो कभी ये चीज रिटर्न कर ही नहीं सकता. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो जब भी साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, यहाँ स्पेसिफिकली ध्यान रखें that x must belong from -π/2 to π/2. Okay? Okay, sir. All right. So let me give you a few questions. फिर उससे काफी क्लियर हो जाएगा ये. Evaluate each of the following. Sine inverse of sin π/3. Always check, जब भी साइन इनवर्स बाहर है, check if x is from principal range or not. अगर प्रिंसिपल रेंज में है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो. So π/3 जो है, does it belong to -π/2 to π/2? Yes, sir. Yes. So principal range के अंदर है, then we can write π/3. Cos inverse का क्या होता है प्रिंसिपल रेंज? 0 to pi. 0 to pi. इसका मतलब 2π/3 इसके अंदर होना चाहिए. Is it? Does 2π/3 belong to 0 to pi? No. No. 2π/3 कितना होता है देखो, 120. 0 to pi is 0 to 180. करता है या नहीं? Yes. Yes. So the answer is 2π/3. Now साइन का देखो, साइन इनवर्स x का, इट इज फ्रॉम -π/2, मतलब -90 to 90. ओके, बट 2π/3 अभी हमने देखा, दिस इज 120, तो ये इनके बाहर आ गया. यस और नो? Yes. अब ऐसे चीजों में आपको वेरी स्पेसिफिकली हैव टू डू सम चेंजेस, क्योंकि यहाँ इट मस्ट बिलोंग टू प्रिंसिपल रेंज. तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बचपन में आपने सीखा होगा. 2π/3 we can write 3π minus π/3. Yes or no? pi Yes. को I wrote 3π minus π/3. Now this is sin inverse sin. इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया. So we have 3π/3 minus π/3.
So what we have is sine inverse sine pi minus pi by 3. अब ये क्वेश्चंस आपने बचपन में करे थे, sin of pi minus pi by 3. If you have multiples of pi, then sine remains sine, pi by 3 is pi by 3, and pi minus pi by 3 lies in second quadrant. In second quadrant, sine is positive, so एक positive sign. So ultimately what we have is sine pi by 3. ये बात किस किस को समझ में आई, किस किस को नहीं आई? Understood, sir. Understood. Okay. So this is actually sine inverse sine pi by 3. Now pi by 3 lies from minus 90 to 90. So the answer is pi by 3. Is it clear? Yes. Okay, Deborah, Yes, sir. please note it down.